अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल क्रिकेट कप का पहला सेमीफाइनल नेशनल बैंक स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान। The word from the center is Pakistan have won the toss and decided to bat first. ये पाकिस्तान की टीम मैं बताते चलूं, पाकिस्तान अब्दुल रज़्ज़ाक कप्तान, मोहम्मद समी भी आज खेल रहे हैं, हसन रजा हैं, तारिक हारून, खुर्रम अली हैं, वकास अहमद, तसव्वुर अब्बास आज वापस आए हैं, काशिफ सिद्दीक, हारिस अयास, अमजद अली, इमरान अली। Talking about the Australian side, Justin Poole being the skipper, Tim Bott, Sim Fahey, Michael Featherton, Steve Paulson, who has been amongst the runs in this tournament, Tim McDonald picked up a fifer as well in this tournament, Martin Rushfelders, Craig McKay, Chris Dixon, Luke Jackson and Mark Lurd. Yeah, exactly. Abdul Razzaq leading from the front, coming in to open the batting today, and he mentioned it during the toss that the Pakistan will be looking to score in excess of 350, and for that it's important that Abdul Razzaq gets runs, and he gets those runs at quick pace. Amjad Ali alongside him, his opening partner. Well, he has batted in almost every position, Amjad Ali, in this tournament. We have seen him batting in the middle order. He has opened the batting as well. He has already scored a century in this tournament. Talking about Australian pace attack, Chris Dixon is going to be bowling the first over from the far end. So if Abdul Razzaq gets going early on, we can expect some fireworks, and Dennis Smallwood signals it as play, and we are all set for the first ball in this first semi-final of Over 40s Cricket Global Cup. Dixon bowling to Abdul Razzaq. अच्छी बॉल और यहाँ पर बिल्कुल सीधा खेला। Abdul Razzaq just played with a straight bat towards mid-off. So first runs on the board already for Pakistan with that single towards mid-off. Yeah, it has been a memorable tour for Team USA for this Over 40s Cricket Global Cup. Solidly driven on the offside, wider of that fielder at long off. That's going to be the first boundary of the semi-final. Beautiful piece of timing by the captain. और जिशान, इससे पहले जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का राउंड में टकराव हुआ था तो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया गो के मैच नहीं जीत सकी थी। ये देखें अब्दुल रज़ाक ने जिस तरीके से 4 रन की जानिब ये शॉट खेला है, ये पहले सेमीफाइनल की का पहला चौका है। Nicely swept away this from Amjad Ali. It's in the air, and has that gone all the way for 6? No, I think it has bounced just before the boundary rope. There you see the on-field umpire Aleem Dar signaling it as a boundary. But an aggressive stroke this from Amjad Ali, clearing his front leg and dismissing the ball out of his sides. Well, it was a safe shot in the end because there was no fielder standing deep on the lawn side. और खेल दिया है, बहुत शानदार शॉट, और 1 बाउंस के साथ 4 रन। फील्डर वहां मौजूद थे, अगर बॉल रोकने का उनके पास मौका था, लेकिन शॉट बहुत ही जानदार था। Abdul Razzaq was waiting for it, clearing his front leg and hitting it straight as an arrow. Long on and long off, both were in place, but no one had any chance of stopping that ball. That is his strength. This is where he hits them. Shoot like that. And he goes once again on the leg side into the gap. Over deep mid wicket for a maximum. It's the first of the semi-final, and no surprises coming from the bat of the Pakistani skipper. और अब्दुल रज़्ज़ाक का यहाँ लाठी चार्ज शुरू होते हुए टिम मैकडोनल्ड के ऊपर पहली बॉल पर चौका लगाया, और फिर ये देखिए जोरदार छक्का सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक और शॉट खेल दिया अब्दुल रज़्ज़ाक ने, ये भी 6 रन की जानिब। But the fireworks have begun finally. A boundary and 2 maximums in the first 3 balls. Once again, it was in the arc. It was overpaced outside the off stump. And this one was even longer. So back-to-back sixes for the Pakistani skipper. And Tim McDonald straight away being put under pressure now. Flick of the wrist on the leg side. Wider of the fielder at long on. That's going to run away for 4 more. Once again, beautiful use of the hand this from Amjad Ali. एक अच्छा शॉट अमजद अली का, ये देखें आप, बहुत ही गैप में से बॉल जाती हुई, कोई रोकने वाला वहां मौजूद नहीं था। Just opening the face of the bat, finding the gap on the offside. Beautiful piece of timing. The short third man fielder is after it, but he gives the chase in the end. Once again, the ball was curving away from the left-hander. He opened the face of the bat and he knew there was no fielder at deep backward of point.
और अब्दुल रज़ाक सिम्फे अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं यहाँ पर. Yeah, just when you were mentioning it that Simfe, he would be a better option against someone like Abdul Razzaq. He was brought in from the other end. Starts off with a half tracker. Abdul Razzaq absolutely nailed it. He was lucky that the ball did not hit his knees there. और एक शानदार शॉट खेला, लेकिन फॉर फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं. 4 रन का इजाफा. Yeah, Simfe, he choosing to come over the wicket against a left-handed batter. Absolute disdain on the leg side, and he did it exactly that once again. Well, credit should be given to both these batters so far from Pakistan. Once again, nicely driven on the offside. Beautiful piece of timing by Abdul Razzaq. All along the carpet. A treat to watch this, the captain. दो फील्डर के बीच में से जिस तरह बॉल निकली है, फील्डर को मौका भी नहीं मिला कि वो बॉल के पीछे ज्यादा देर भाग सकें, क्योंकि बहुत ही जानदार शॉट अब्दुल रज़ाक का. इस बार ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, लेकिन अब्दुल रज़ाक कोई चांस नहीं दे रहे फील्डर और बॉलर्स को. Tell you what, Abdul Razzaq is looking like he's in a really good nick here. Abdul Razzaq is in a too good of a nick to miss those. This one was pitched up and he slogs it over deep mid wicket for a maximum. तो अमजद इस बार एक्शन में नजर आए और मिड विकेट बाउंड्री को उबूर करती हुई गेंद 6 रन के लिए बाहर जाती हुई. Got down on one knee and smacked it. ऑफ Middled it to स्टंप के perfection. बाहर, दानिश ऑफ स्टंप के बाहर गिरी हुई गेंद को उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेजा. Going for a reverse sweep. Beats the fielder at short fine leg. Gets another 4. और आजकल लिमिटेड ओवर क्रिकेट में इस किस्म के शॉट्स हमें अक्सर नजर आते हैं. तो अब पाकिस्तानी प्लेयर्स, इवन वेटरन्स प्लेयर देखें कितनी परफेक्शन के साथ ये स्ट्रोक खेल रहे हैं. Oh, that is beautifully played through the covers. Amjad driving the ball to perfection. Playing it in the gap. बैक फुट पे अमजद ने पंच किया और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर. Plays it straight. Dissecting both the fielders at long off and long on. Another 4 for Abdul Razzaq. और इस चौके के साथ अब्दुल रज़ाक ने 50 रन अपने मुकम्मल किए. Drives it again. Drives it well. He will get 4 more for it. अब्दुल How good रज़ाक is he कोई looking? मौका नहीं दे रहे हैं, ना बॉलर को ना फील्डर को. एक और चौका हासिल किया तो वो जो शुरू में एक अपना अज़्म लेकर आए थे कि हम 350 का हदफ क्रॉस करेंगे, 18वें ओवर का आगाज हुआ और अब्दुल रज़ाक ने एक और जोरदार शॉट खेला है. फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. That was a gift for Abdul Razzaq. It was a full toss delivery. It's always difficult for leggies to control their lands. What a shot that is by Abdul Razzaq. It wasn't too short. He still slapped it in the gap for a 4. 40 साल की उम्र के बाद भी अब्दुल रज़ाक के स्ट्रोक्स में वही फायर पावर हमें नजर आ रही है. तो अमजद अली के 50 रन भी मुकम्मल हुए. इस टूर्नामेंट में मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले अमजद अली अब 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. उन्होंने 52 गेंदें खेली, 6 चौके 1 छक्का, 96 का स्ट्राइक रेट है. छह रन. तो अब्दुल रज़ाक जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, तो उसमें बजाय ये कि थकावट के आसार आते 40 साल की उम्र के बाद, उनकी बैटिंग में मजीद जहराना अंदाज हमें नजर आ रहा है. Fetch that one, mate. Goes at it once again and it travels all the way for another maximum. I need to be standing down there. Typical Abdul Razzaq shot. I've always dreamt of catching one outside the boundary line.
Once again, he will get another maximum. This is just mind-blowing stuff from Abdul Razzaq. Superb batting. 20 ओवर मुकम्मल हुए, पाकिस्तान 151 बगैर किसी नुकसान के। और एक और शॉट खेला, फील्डर ने यहां मिस किया, बॉल सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन्स का इजाफा और यूं अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। 67 बॉल पर 101 अब्दुल रज़्ज़ाक, और बहुत ही जाराना इनिंग्स अब्दुल रज़्ज़ाक की। और ये डग आउट जहां पाकिस्तानी बैटर्स और खिलाड़ी हौसला बढ़ाते हुए अब्दुल रज़्ज़ाक की शानदार सेंचुरी पर उनको शाबाश देते हुए। 21 ओवर का खेल मुकम्मल, 158 बगैर किसी नुकसान के। A slower delivery that has been put away on the leg side. That's going to go and touch the boundary ropes. Nothing is going in the favour of the Australians so far. Even a miss hit is going and travelling to the fence. Just opening the face of the bat. Finesse and touch. There's some Amjad. Back-to-back boundaries just for the left-hander. Getting his revenge from the fast bowler. 23 done. Pakistan at 170 now for none. क्रिस डिक्सन जो है वो बड़े अच्छे अब तक बॉलर साबित हुए, और यहाँ अब्दुल रज़्ज़ाक ने भरपूर फायदा उठाया। बॉल सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और छक्का अब्दुल रज़्ज़ाक का। Clearing his front leg, there you see, and hitting it straight as an arrow. कॉल्सन 4 रन्स की जानिब, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, और अब्दुल रज़्ज़ाक की जाराना बैटिंग जारी है यहां पर। Once again, a pickup shot on the leg side. It's into the gap. Mid-wicket fielder is just going to watch that ball go past the boundary ropes once again. Nothing is working in the favour of the Australians. Once again, a boundary to end the over with 28 done. Pakistan are 210 for none. Low full toss once again. Driven down the ground. Is that going to be cut off? No. How well has he timed that one? There was long on and long off, both positioned at the boundary ropes, and still the ball went past it. Amjad Ali this time driving it wider of that fielder at long off, and tell you what, that might go all the way for 4 as well. Yes, it does. Well, Dixon already gave up. और मिकी भी लकी साबित ना हो सके ऑस्ट्रेलिया के लिए, और यूं 29 ओवर का खेल मुकम्मल, 228 रन पाकिस्तान के बगैर किसी नुकसान के। Went for the full shot. There's a protection out there, but he won't get there, and boundary for Amjad. Beautifully played. Went for the big shot. It's high, it's handsome, and it's a huge one. And fellow commentator Zishan had a chance to catch it. I think he's dropped it as well. जोरदार शॉट अब्दुल रज़्ज़ाक का, कम से कम 13-14 फीट बाउंड्री लाइन से बाहर, बहुत बड़ा छक्का। ये देखें, ज़ीशान ने एक आसान कैच ड्रॉप किया। एक और जोरदार शॉट, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। 6 रन तो अब्दुल रज़्ज़ाक ने इस बार मिड ऑन बाउंड्री का इंतखाब किया, और एक और छक्का तो अब्दुल रज़्ज़ाक, जिस तरह फर्रुख कह रहे थे कि डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए। He goes for it high and handsome, should be taken it long on, dropped again. Goodness me. एक और चांस अब्दुल रज़्ज़ाक को मिला, तो लग रहा है कि आज ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स ने तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान को। एक और जोरदार शॉट, इस बार ऑफ साइड पर 6 रन अलीम डार इशारा करते हुए, तो अब्दुल रज़्ज़ाक अनस्टॉपेबल। No half measures this time. It was well middled, although it wasn't a long hit, but played it well enough to clear the boundary.
Full toss, smash down the ground. Will this be held? That has gone over the rope. Over the rope. Some effort from the fielder, but it didn't matter. And the ball landed beyond the rope for 6 more. Went for the big shot, swept away, and he's found the boundary as well. We have to wait for the umpire's signal. Yes, boundary given. Nicely struck by Amjad. Smashed away hard. It's long, it's handsome, and has gone over the rope. 6 more for Abdul Razzaq. He is into 190s now. What a knock it is turning out to be. It's a huge performance. आज इस मैच को देखने वाले हर फर्द को, पाकिस्तान टीम में शामिल हर शख्स को, ऑस्ट्रेलियन टीम में शामिल हर किसी को जवानी के अब्दुल रज़ाक की याद आ रहे होंगे। इसी तरह बॉलर्स की पिटाई किया करते थे वो अपने प्लेइंग डेज में, और आज भी वही स्पार्क। Could be out. He hasn't timed it. Who wants it? Gone. Abdul Razzaq couldn't get to his double 100. Finally, the catch has been taken. And Steve has struck here for Australia. Missed time shot. And a huge innings. फाइनली पहली कामयाबी मिली ऑस्ट्रेलिया को, और 195 रन बनाकर अब्दुल रज़ाक आउट हुए। यहां अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल करने की अटेम्प्ट की थी, बट सही तरह टाइम ना कर सके और गेंद फील्डर के हाथ में, और एक मैजिकल डबल सेंचुरी से पहले अपने विकेट गंवाई। 120 गेंदों पे 195 रन बनाए, 11 छक्के 22 चौके अब्दुल रज़ाक की इनिंग में शामिल। यूं 299 रन के पहले विकेट की शराकत का खात्मा। And Tariq Haroon has come out of the middle. Went for the big shot. Tariq Haroon. And it gets missed by a fielder. Can you believe it? It's a fumble by the boundary rider and boundary gifted to Pakistan. चारियाना अंदाज में स्ट्रोक खेला, फंबल किया फील्डर ने बाउंड्री लाइन के करीब, और फायदा हुआ इसका पाकिस्तान को। Now he's 1 away from his 100. And he's got to his 100 now. Well played, Amjad. 100 of 105 deliveries. His innings has been overshadowed by the brilliance of Abdul Razzaq. But what a knock, what a series he's having. Very well played, young left-hander batsman, Amjad. 105 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 1 छक्का 12 चौके शामिल। बड़ी स्टेडी सी इनिंग खेली है, अनलाइक रज़ाक से इनिंग। रज़ाक काफी जारियाना अंदाज में खेलते रहे। Top edge, will this be held? Yes, Sadoli, and neatly accepted. Finally, a small innings of Tariq Haroon has come to a close, and Steve has been impressive. He struck again for Australia. स्विप करके खेलना चाहते थे, बट टॉप एज लगा बल्ले का और गेंद बाउंस होके सीधी फील्डर के हाथ में। तारिक हारून 4 रन बनाकर आउट हुए। 4 रन एक चौके की मदद से उन्होंने हासिल किए थे। Tassawar Abbas, an explosive batsman, has come out of the middle. और यहाँ यकीनी तौर पर चौका और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पाकिस्तान के पास बाउंड्रीज आने का सिलसिला नहीं थमा। गो के बैक टू बैक 2 खिलाड़ी आउट हुए, बट बाउंड्रीज आने का सिलसिला जारी है। Went for the big shot, Tassawar Abbas, and he has earned half a dozen. He has cleared mid off comfortably. First 6 to his name. और यहाँ फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। गो के कोशिश की थी उछल के कि गेंद को रोक ले, लेकिन बिल्कुल नामुमकिन उनके लिए। But Amjad is still out there with 103. Once again hitting it straight down the ground. Tassawar Abbas with a magnificent hit over long off. A wonderful start to the over. Dixon earlier bowled really well, but what a way to greet a new bowler. अपने मसल्स फ्लेक्स करते हुए एक और छक्के का इजाफा किया यहाँ तस्सवुर अब्बास ने। Well, Amjad goes big on the leg side. 2 fielders converge. Is that going to be taken? That has been taken. Another wicket goes down for Pakistan, but once again, the job has been done by the left-handed opener. Amjad was once again looking to clear that field on the leg side. There were 2 fielders out there. The deep mid-wicket fielder made absolutely no mistake. Amjad Ali going back after scoring a wonderful century once again. And with his dismissal, Pakistan are 336 for 3. अब देखते हैं आखिरी 4 ओवर्स में ईशान पाकिस्तान कितने रन का इजाफा करता है। Well, Waqas had hit that away on the leg side. Once again, chance for the fielder, a deep mid-wicket, and all of a sudden, Australians have now started taking those catches towards the end of the innings. That's another wicket goes down for Pakistan. Mark Lurd picking up his first. कोशिश यही थी कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा रन करें। ये देखें, गेंद हवा में जरूर बुलंद हुई, बट फासला ना तय कर सकी। और वकास 2 रन बना के पवेलियन की जाने वापस।
A big heave on the leg side. It's in the air, and don't worry, because that's going to go over the boundary ropes for once another half a dozen. And with that, 350 now comes up for Pakistan. तो तसव्वुर ने पैगाम भेज दिया है कि पाकिस्तान टीम यहाँ रुकने के मूड में नहीं, रन बनाने की रफ्तार जारी। 350 रन पाकिस्तान के यहाँ मुकम्मल हो चुके। But Tassawar Abbas goes big once again, and long off fielder is just going to watch the ball sail over his head. Well, that stayed in the air for an eternity. Another slower delivery attempted by Dixon. Tassawar Abbas might have been a little early into that stroke, but still got plenty on it. 39 of just 15 balls. Another flat hit. One, in fact, that has gone all the way for 6 again. 2 back-to-back maximums for Tassawar Abbas. Continuing from where he left off in the previous games. 45 of just 16 deliveries. एक बर्क रफ्तार 50 की जानिब इनके कदम बढ़ते हुए। Hassan Raza just gently driving it towards deep cover, giving the strike back to Tassawar Abbas. 15 runs of this over already with 1 ball still remaining. In fact, they're going to come back for another run on the overthrow. Sloppy stuff this from the Aussies. Tassawar Abbas once again tries to go big, got a thickish outside edge, and that's going to run away down towards third man for yet another boundary. और इसके साथ ही तसव्वुर अब्बास की हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई। 18 गेंदों पर 50 मुकम्मल की तसव्वुर अब्बास ने। एक शानदार हाफ सेंचुरी तसव्वुर अब्बास की। We're talking about 380, even 400 is on the cards. Once again he goes big, long on, no chance whatsoever. 4 followed by a maximum, and 380 comes up for Pakistan now. Big appeal, that kept low, finger goes up. Well, Leahy is celebrating, but the damage has already been done. Tried to play it across the line, trapped in front of the stumps. Pretty close call. 5 down now. Hassan Raza walking back after scoring 7. Pakistan 381 for 5. आखिरी ओवर कराने आएंगे क्रिस। Starts off with a full toss on leg stump, picked away by Tassawar Abbas, and that has been the story of the day so far. Another 6 down the leg side. Once again, over extra cover, it's in the air. Chance for the fielder, and he is holed out. Dixon celebrating and applauding the effort from that fielder, but what an knock Tassawar Abbas has played. This time tried to clear the cover fielder on the offside. Once again getting the elevation and not the distance. But he did his part. Tassawar Abbas, 67 of just 23 deliveries, 7 maximums and 4 boundaries to his name. Pakistan 391 for 6. Apish straight away finds a gap on the offside. That might go all the way for 4. Yes, it does. So 400 is still on for Pakistan. Once again, Apish, similar region. Once again into the gap. Almost a carbon copy of the previous delivery. 2 boundaries now and 2 balls for Kashif. वही जगह वही रिजल्ट। Last ball coming up. Pick up shot on the leg stump. Just got his hands to it. The fielder at fine leg. They're just going to get a single, Pakistan, and they're going to finish on exactly 400 runs for the loss of 6 wickets in the 45 overs. Quite a magnificent batting performance this from the men in green. ये पाकिस्तान का बैटिंग कार्ड। अब्दुल रज़ाक 195 रन बनाए 120 गेंदों पे। अमजद अली ने 103 रन बनाए 108 गेंदों पे। तसव्वुर अब्बास ने 67 रन से स्कोर किए 23 गेंदों पे। इसके अलावा तारिक हारून ज्यादा बड़ा स्कोर ना कर सके, 4 रन बना पाए। हसन रजा ने 7 रन स्कोर किए। काशिफ सिद्दीक जो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आए 9 रन बनाए 3 गेंदों पर। Yeah, plenty of bowling options being used by Australians. 8 bowling options overall. Chris Dixon picking up 2 wickets was very expensive. Look at McDonald's figures. 4 overs, went for 52 runs, couldn't pick up a wicket. Mark Lure and Stephen Leahy picking up a wicket each, and Steve picking up 2 wickets after bowling 7 overs. 13 extra runs were given by the Australians, and Pakistan scoring 400 runs in this first semi-final. So Australia needing 401 runs to win this first semi-finals of over 40s Cricket Global Cup here at National Bank Stadium.
Welcome back from National Bank Stadium, Karachi, here in this run chase of this first semi-final of over 40s cricket Global Cup between Pakistan and Australia. People who are just joining us, Pakistan earlier won the toss, batted first and scored mammoth 400 runs on the board. Martin Rod-Shelter is going to be opening the batting for the Aussies, the right-handed batter. They need to provide them a very good start with the Australian openers. Exactly what Pakistan got in the first innings. And Craig McKay, the left-handed batter, his partner at the other end. So Australians are going to starting with the left-hand, right-hand combination. And to start the bowling for Pakistan, it's going to be Imran Ali, who was rested in the previous game, the new ball bowler. He has been really good. Imran Ali, especially with the new ball. He hits the seam hard, gets some lateral movement of the deck. Starts off with a foolish delivery outside the off stump there, Imran Ali. Cut away on the offside into the gap, and that's going to run away for 4. The third man fielder did not even bother chasing that down. So first runs on the board for Australia. Craig McKay opening the account with a boundary on the offside. After 2, Aussies are 4 without a wicket. Ooh, good delivery. Just getting an inside in. Mix up between those two batters. Both are stranded at one end, and it did a direct hit. Oh my goodness. Imran Ali, well, he's complaining the fielder. He should have been standing up to the stumps. It's Imran Ali's fault. He's supposed to run back towards he has to come behind the stumps to collect the ball. So he was just standing there. The last ball coming up. Imran Ali with the left-hander, driven straight down the ground. Some aggression shown there by the left-handed opener. That ball is going to touch the boundary ropes. A boundary to win the over with 5 runs coming in that over of Imran Ali. 3 overs done. Aussies are 9 without a wicket. 41 overs remaining. Outside edge, and that has been grasped. Not good technique there. Puram there. There you see, if you look at his right leg, initially he might have been looking to go down the leg side. No, the ball was very straight, simple, straight catch which he dropped. 18 for none after 6. Imran Ali bowling his 4th. Outside edge, and if there would have been a second slip, would have gone straight into his hands. Abdul Qadir slides in attempting to stop that ball, but the ball went past the boundary ropes. Well, I don't know who is the captain there, who is leading the side. See, it went through the second slip, but no use. Oh, they are so scared. 400 runs on the board, and the Pakistan team is not putting a second slip. Chipped in the air into the gap on the offside. The cover fielder is after it, but the ball is going to win the race in the end. A boundary to the left-hander. Well, at least they have started playing some strokes on the spinners. Deep mid-wicket and long off in place. A full toss which has been hit straight down the ground over mid-on for a magnificent 6. Unusual stroke this from Martin. Well, we have been watching him struggle early on. This time that was almost a sweep shot. There you see, sweeping it over mid-on for a wonderful hit down the ground. Slower So they are a delivery. bit scared. This is 4 runs through the gap towards the long off. Yeah, beautiful shot on the offside there by Craig McKay. It was full, it was over, pitched outside the off stump. Nicely driven past that fielder at extra cover and mid-off. Down the wicket he comes. Nailed over long off. Magnificent hit once again by Martin. Well, they're showing some intent. They want to score some runs. A big hit straight over the head towards the side screen for a 6. Now we will see another fielder somewhere going back towards the long off. No. और एक ऊंचा शॉट खेला है, फील्डर वहां मौजूद, देखेंगे आउट होने का खतरा। और देखें पहली विकेट यहां पाकिस्तान लेने में कामयाब हुआ 56 के स्कोर पर। ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट, मार्टिन 29 रन बनाकर जो है पवेलियन लौट गए हैं।
और यहाँ वक्कास को विकेट लेने में कामयाबी मिली। ये देखिए आप, एक ऊंचा शॉट मारा लेकिन फील्डर के बिल्कुल सीधी हाथों में। There was no other option for Craig Martin. He had to go for it. The required run rate was increasing. Martin Rothschild is gone for 29 of 33. It's 56 for 1. नए आने वाले बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के स्टीव फॉल्सन। Lots of slower deliveries from Wakas. Won't be easy for Steve Paulson. He's just come onto the crease. What can Craig McKay do here? Is he going to break free? और यहाँ बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन की जानिब, 4 रन्स का इजाफा स्टीव फॉल्सन के स्कोर में। Yes, Wakas drifting down leg and paying the price for it. Steve Paulson is too good of a batsman to miss out on those. और रन आउट होने का खतरा, अपील की यहाँ पर अंपायर्स ने सीधा थ्रो किया टीवी अंपायर की जान। I would be really interested to see if Kashif Siddique had the ball in his hand. फौरन क्विक रिस्पांस किया और Looks like he's gone. Yes, he is. He will have to walk back. और यूं ऑस्ट्रेलिया की दूसरी विकेट 75 के स्कोर पर गिरी। Steve Paulson was the man in form. He will have to walk back, having scored just 12. Australia are 75 for 2. बहुत ही बाहर एक बैट बॉल थी और फील्डर बॉल के पीछे, लेकिन 4 रन्स यहां पर हुए। You expect Craig McKay to dispatch bad deliveries. He's spent enough time on the crease to understand how these bowlers are bowling. और ये पुरजोर अपील यहाँ पर काशिफ सिद्दीक की, अंपायर का इशारा आउट, और काशिफ सिद्दीक एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। यहाँ पर 81 के स्कोर पर तीसरी विकेट। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। अब That was right in line. Pitching right on the middle stump, coming back in. It was played across the line. Missed it completely. Smallwood agreed with Kashif. It goes for 38. Some misfielding there. Won't hurt Pakistan too much. He bowls very slowly, tosses the ball up beautifully, mixes the straighter ones with the off spinners beautifully. बैटर्स मौजूद हैं, जस्टिन पोल, टिम बोट और अब्दुल कादिर भी एक विकेट लेने में, अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने में कामयाब हुए। अब्दुल कादिर की यूं इस टूर्नामेंट के अंदर 18 विकेटें मुकम्मल हुई। He wanted to charge at him, tossed it up beautifully. All Bott could do was hand over a simple catch to Abdul Qadir, who did nothing wrong. Tim Bott gone for a duck. It's 82 for 4. लुक जैक्सन नए ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन, राइट हैंड बैटर हैं और 2 ओवर के अंदर 3 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की आउट हो चुकी हैं। दबाव डालते हुए अब्दुल कादिर यहां पर आए हैं। Ooh, how close was that? Excuse our excitement. I think they would be looking to wrap things up as soon as possible. It wasn't really there to be cut. Almost caught in the slips. उफ, हाथों में लगी बॉल जरूर, लेकिन सही पकड़ नहीं सके। ये देखें, एक शॉट खेला है और 4 रन्स की जानिब, छक्का बल्कि अंपायर का इशारा। Justin Poole making sure he does not miss out on that short delivery from Kashif Siddique. Happens with the best of the leggies every now and then.
Straight to the man at long off. Imran does nothing wrong. Wicket number 2 for Abdul Qadir. It's all happening for Pakistan here at National Bank Stadium, Karachi. और ये देखें आप, शॉट खेला लेकिन इमरान बिल्कुल वहां मौजूद थे और यूं ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट गई। जस्टिन पॉल 11 रन बनाकर आउट हो गए, 91 पर 5। Playing a cross-batted shot there. The fielder at deep mid-wicket is Tariq Haroon. Had to run all the way from square leg to deep mid-wicket. He is still super fit. This isn't the first time that Qadir has figures like these in this tournament. और यहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन का इजाफा। मैकडोनल्ड ने खेला सीधा बाउंड्री लाइन की जानिब, गैप से बॉल निकलती हुई। 4 रन। Pakistan wouldn't mind that one bit. They're getting the wickets that they need. Australia still far, far away from chasing down that target of 401. Going for 2. दूसरा रन लेने के लिए दौड़े, मुश्किल हो सकती है लेकिन डायरेक्ट थ्रो नहीं लगी। अगर डायरेक्ट लगती है और ओवर थ्रो के 4 रन होंगे यहाँ पे यकीनी तौर पर। So 6 runs for Australia on that delivery. Much needed runs for Team Australia. अच्छी कोशिश थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली और इसके साथ ही 4 रन का इजाफा हुआ ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के अंदर। लुक जैक्सन, कैच हो सकता था ये अगर फील्डर थोड़ा और करीब होते। तारिक हारून, Love the dive by Tariq Haroon. Attempted it. Oh, ये तो ड्रॉप हुआ है लेकिन एक अच्छी बॉल और एक अच्छा शॉट, गैप से जानिब 4 रन का इजाफा। लेकिन इन इक्के दुक्के 4 से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक चाराना इनिंग खेलनी होगी। चार रन का इजाफा ऑस्ट्रेलिया के स्कोर में। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 117 रन। I think it's not a semi-final, it's a qualifier or the eliminator. Whoever will going to win is going to go straight into the finals, and the loser will play again with the winner of the match going on in some other stadium right now. Another wicket is gone. Little bit short. The batsman tried to pull it, McDonald, but straight in front of the stumps. So one more wicket gone. This is the 6th wicket, right plumb in front of the stumps. कादिर तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए एक और कामयाबी दिलाई पाकिस्तान को। टिम मैकडोनल्ड 20 रन बनाकर पवेलियन की जानिब वापस। एक छक्का 2 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल जो 11 गेंदों पर मुश्तमिल थी। आउट होने का खतरा यहाँ पर और आउट। एक और कामयाबी अब्दुल कादिर को। First it was hit on the pad and then off the gloves to the wicketkeeper, and the umpires waved towards the gloves and said yes, he's got behind. A soft dismissal for Michael for, without scoring a run. So 7 wickets gone for 127. Smashed through the covers for 4. चूंकि तकरीबन सारे फील्डरी दायरे के अंदर, साइड पे कोई इसको रोकने वाला नहीं था। I have a strong feeling that the Australians are taking this match as a practice match for the qualifier. Upish and out. Another wicket gone. आसान कैच यहाँ पर और मार्क लर्ड आउट हुए। हारिस अयाज का शिकार हुए। ये 7 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 8वां नुकसान और अब पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी से सिर्फ 2 विकेट दूर। देखिए निहायत ही आसान कैच और कोई गलती नहीं की समी ने।
हारिस अयाज को कामयाबी मिली, मार्कलर्ड 11 रन बनाकर पवेलियन की जानिब वापस। शानदार कैच, फंबल हुए बट कैच दूसरी कोशिश में थामने में कामयाब हो रही हूं। अब्दुल कादिर के 5 विकेट हॉल इस मैच में, और साइमन फही 1 रन बना के पवेलियन को लौटे। अच्छा कैच स्लिप पर, ये देखे बाहरी का नरा लिया, पहली बारी पे फंबल में, लेकिन दूसरी बारी पे डाइव लगाते हुए शानदार कैच। Now we have to send Abdul Qadir for the World Cup, is it? 5 wickets for the veterans. Another wicket gone. Salmon is gone for 1. 9 wickets for 147. So now they are taking it as a practice as a batting practice for the match tomorrow. Whoever with the winner, West Indies or the USA. A big hit. It's up in the air and it's gone. It's all over. Now you take it over. और इसके साथ ही पाकिस्तान ने 252 रन से ये मैच जीत कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है इस MCW ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप में। 401 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 148 रन पर आउट। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। हारिस अयाज ने 2 विकेटें हासिल की इस मैच में, लेकिन पाकिस्तान के सबसे कामयाब बॉलर इस मैच में अब्दुल कादिर रहे, जिन्होंने 5 विकेट हॉल हासिल किया। इस टूर्नामेंट के भी सबसे कामयाब बॉलर, लीडिंग विकेट टेकर हो चुके हैं अब्दुल कादिर। अब तक 22 विकेटें यहां हासिल कर चुके हैं, और पाकिस्तान टीम खुशगवार मूड में सेलिब्रेट करते हुए पवेलियन की जानिब आ रही है। ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चार्ट, मार्टिन 29 रन बना सके, क्रेग मैक्के ने 38 रन स्कोर किए। इसके बाद मिडल में आके देखें तो ल्यूक जैक्सन ने 25 रन स्कोर किए, मैकडोनल्ड ने 20 रन स्कोर किए। 1 डाउन पोजीशन पर आने वाले स्टीव पॉल्सन ने 12 रन की इनिंग्स खेली थी। आखिरी लम्हात में मार्कलर्ड ने 11 रन बनाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई बैटर खुलकर मज़ामत ना कर सका पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने, और 148 से पूरी टीम ढेर हो गई। ये पाकिस्तान का बॉलिंग का अब्दुल कादिर सबसे कामयाब बॉलर, 6 ओवर्स कराए, 35 रन दिए, 5 विकेटें हासिल की। हारिस अयाज ने 5.5 ओवर्स में 27 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वकास और काशिफ के हिस्से में 1-1 विकेट आई। ये मैच समरी, पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। 45 ओवर्स में 6 विकेटों के साथ टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर 400 रन सजाए। अब्दुल रज़ाक ने 195 रन स्कोर किए। 120 गेंदों पे अमजद ने 103 रन बनाए, जबकि तस्सवुर अब्बास ने 67 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस जैक्सन ने 2 और स्टीव पॉल्सन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 28वें ओवर में 148 रन स्कोर करके आउट हो गई। क्रेग मैक्के ने 38 रन स्कोर किए, मार्टिन ने 29 रन स्कोर किए, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर ने 5, जबकि हारिस अयाज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। यूं पाकिस्तान 252 रन से ये मैच जीतने में कामयाब।